Good evening, all of you. I am Dr. Ankit Mehta from Zydus Hospital, Ahmedabad. Welcome to our first Facebook Live session for this year, which is 2019. And what I am going to talk about today is talk, when to worry. All of you know, we have already spoken about fever, we have spoken about childhood emergencies, and this topic of when to worry is really important. What I have come across is over the years, there is significant increase in the number of patients of cough, and what we have noticed is that the etiology and science also has changed over the time for our understanding of cough. So what I tell you today is that what actually is cough, why does stuff happens, and do every time a cough happens we need to worry, and if we need to worry, when should we start worrying? And there are so many sounds which are produced along with the cough in child. How do you notice them? Is there anything to worry in that? And if we need to worry, should we immediately visit emergency? So there will be so many things which will be coming to our mind. So before I start, first of all, what is cough? So cough है क्या? What is cough? So cough is a protective mechanism. Cough is anything which irritates person's nasal mucosa till the mucosa which is seen in the lungs. So here it is. So anything which is from here, that means anything which is lining the mucosa, this is from the nose, and then you go back to the nasopharynx, that is the part which is carrying the air to the main part of the airway, and these are the lungs. So anything which irritates this mucosa, there is a cough. So cough basically is a protective phenomena that nobody can enter this space, or if it tries to enter, the person will try to remove it. So that is one of the things which will happen. So that is the cough means it is a protective phenomenon. So there are cuff receptors. Cuff के receptors यहाँ से लेके it is all lining here and they are reaching till the lung. So anything which irritates, maybe like an infection or maybe something which is foreign body, like anything which has been put, something maybe like a coin or maybe like a small bead. So that goes and irritates the mucosa and the cuff mechanism comes up. So what we understand is cuff definitely is a protective phenomenon. So we should start worrying that what is the reason of cough rather than why cough is happening. So does cough happen normally? क्या cough normally किसी बच्चे को हो सकता है just as a protective mechanism? So the answer is yes, yes. 2 से 6 साल के बच्चों में the children between the age of 2 to 6 years can simply have cough that is a normal cough and which is a dry cough. That means that a person can have cough from the age of 2 years till 6 years when they are predominantly going to school as a protective phenomena and usually even seen in children who are elder. So that is very commonly seen and they make up 10 to 30 times in a day. Can you imagine a normal cough coming for 10 to 30 times in a day? So what I mean to tell is that cough can be well normally seen in children and that is called as a normal dry cough and where we do not need to worry. So these are the normal phenomena which can happen. So what are the age groups where you can divide cough? So I prefer to divide cough in age groups. One is any person who is having cough in initial 6 months. I'll take it as something different. So cough below 6 months, cough in toddlers, that means 6 months to 2 years, and cough in preschool children, that is 2 to 6 years, and then cough after 6 years. So I will try to tell you that when we should start worrying and what are the things. So the age group will be under 6 months, I'll take cough as different. Between 6 to 12, 2 years, I will take it different, 2 to 6 years, and then above 6 years. So the cough mechanisms are, there are so many mechanisms where cough is produced and I'll try to tell you that how cough is produced. One thing is, the commonest thing is anything like a viral infection. So normal viral infection will have like a fever will come first of all, which will be there for 2 3 days. Then the fever goes and then you start having running nose and then you have a cough. This cough will be typically a dry
cough, which will be persistently more in the day and sometimes even in the night. So that is a very typical normal cough after the upper respiratory tract infection, and it normally lasts up to 7 to 10 days. So normal sardi khasi mein at least you might get a cough for at least 7 to 10 days. In some of the babies, it may even last up till 3 weeks. यानी एक बच्चे को नॉर्मल सर्दी खांसी होने के बाद आपका बुखार फर्स्ट 3 days में चला जाएगा, लेकिन the cough may persist for 14 से 21 दिन तक. So that is one thing which we need to notice, and this is the commonest cause of cough in the children. Apart from the normal cough which I have spoken, that a child can cough 10 to 30 times in a day, then the second commonest, that will be a normal cough. Second cause will be the infection in the respiratory tract. Respiratory tract means the nasal and the pinche mucosa, which is we call as adenoids, and the pharynx, and then the larynx, and then trachea, and then the lungs. Okay, so that is the commonest cough which is seen. The other cough which we commonly see is the cough which is predominantly in the night. So the babies sleep, and typically after 1 hour and 2 hours they start having cough, and this cough will make them awake, and they might even want to get irritated, want to go into the open air, and you take them in the lab and take them around, and they become quite normal, and they again sleep, and this cough again comes after 1 or 2 hours, and this is typically a dry cough, and which can also happen usually in the early morning. So that is a very second cough which we commonly see, and these are the typical history of a cough where you might have a allergic component to it, which we commonly see as an allergic cough. So वो cough usually कोई भी बच्चा जो persistently रात में खांसी करता है या सोने के after 1.5 hours 2 hours cough करता है या early morning में बहुत cough करता है, कई बार cough करते करते ही vomits out, and this cough has been running around for now more than 4 weeks, then I will start worrying is there anything which needs to be worrying, और या सीजन बदलने के बाद इस प्रकार का कफ रहता है, स्पेशली ऐसे कफ दिवाली से लेके होली तक दे आर प्रीडोमिनेंटली सीन, बिकॉज हमारा एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो नॉर्मली बहुत सारे पोस्ट दिवाली आ जाते हैं, एंड देन देयर इज अ एटमॉस्फेरिक चेंज, इमीडिएटली टेम्परेचर चेंज हुआ होता है. सो दीज आर द कफ्स व्हिच आर वेरी कॉमनली सीन. नाउ द other cough which I am going to tell you about, which is especially seen in pediatrics, is the barking cough. So barking cough, normally the history will be, sir, एक दो दिन से सिर्फ हल्की सर्दी खांसी थी, and then in the evening or in the late evening, this patient starts to have a barking cough, where the child starts to have lot of cough, where the child may not even be able to breathe in the end, and they typically may have a sound like so that will be the sign which will be produced. So that is typically a cough of viral barking cough or a croupy cough. So that will be the sound which will be produced. And mind you, if any parent who notice that this is the kind of sound which a baby is having while coughing, like that will be a worrying sign. So immediately this patient requires, this baby requires attention, and probably you should run and see the doctor immediately in the emergency. And these are not to be the patients to be taken in the OPD. ऐसे बच्चों को OPD में लेके आप ना बैठें. It is better to go to an emergency where a child can be immediately seen. And so the other thing which is I have already explained, a normal cough, the respiratory infection cough, then you have a cough which is allergic, then you have this barking cough. Other cough will be like an pertussoid cough. So pertussoid cough, normally now, though vaccination is commonly available for pertussis, again we are seeing that this pertussis cough is coming. Normally वो पहले 5 साल से छोटे बच्चों में देखा जाता था, पर अभी ये कॉफ जो है वो 5 से 18 साल के बच्चों में ज्यादा देखने मिलता है. और this is commonly seen where the patient has a typical cough where it is called as 100-day cough. So what is an 100-day cough? Here pertussis is a bacteria which causes the infection of this lining which is called as the larynx and the trachea, and they start to have a cough which is lasting for 1 to 2 minutes. Child ko cough will come in bouts. So the child will they'll keep on coughing, and they will try to embrace the parent,
and their face will become totally congested, and at times they may even vomit. And why they embrace? Because they are not able to get the amount of oxygen which is required for the baby to breathe in, and they become quite annoyed, and even उनका ऑक्सीजन कम पहुंचने से they might become unconscious. So that is a typical pertussoid cough. It comes in paroxysm. Paroxysm मतलब एक एक 2-2 मिनट के बाउट आएंगे. Suddenly the child will have a bout and they will keep on coughing, and in the end they might get exhausted, they might be completely red or sometimes even become blue, and they might vomit or fall unconscious. And again, this is a cough which is a very serious cough, and now there is a resurgence of this cough which is typically called as pertussis cough or pertussoid cough or pertussis like illness cough. And this pertussis like illness cough is very important because बहुत सारे viruses ऐसे हैं जो बिल्कुल pertussis जैसा cough करते हैं, and which may again be a worrying cough. Now the other cough which has been recently seen and has been diagnosed more is a bronchitic cough. So पहले बच्चों के अंदर we never used to tell कि probably this is an bacterial bronchitis. Commonly हम adults के अंदर ज़्यादा बात करते थे, and we used to speak a lot about that. But now recently there is a term which is called as protracted bacterial bronchitis. Protracted मतलब होता है लंबा, यानी लंबा बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस चलना. नॉर्मली ऐसे बच्चों को इनिशियली सर्दी खांसी बुखार होता है, एंड धीरे धीरे वो सर्दी खांसी बुखार कम होने की बजाय जो कि हमने देखा था कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में होना चाहिए, वो कॉफ बढ़ते ही चला जाता है. एंड ये कॉफ टिपिकली कब देखने मिलता है? जब बच्चा सो जाता है उसके आधे एक घंटे बाद. सो क्या उसमें और एलर्जिक कॉफ में कोई डिफरेंस है? नॉर्मली एलर्जिक कॉफ इज यूजुअली ड्राई, एंड जो हमारा ब्रोंकाइटिक बैक्टीरियल कॉफ है वो नॉर्मली वेट होता है. एंड ये जो वेट कॉफ है वो नॉर्मली दिन में सोने के बाद भी आता है, रात में सोने के बाद भी आता है, और उसमें चेस्ट में एक अजीब सा सिक्रीशन जैसा प्रॉब्लम लगता है. पेरेंट्स आके बोलते हैं सर इसके चेस्ट में कुछ कॉफ भर गया ऐसा लग रहा है. एंड टिपिकली दैट विल बी द कंप्लेंट दैट जैसे ही बेबी सोता है उसके 1-1.5 घंटे बाद वो कॉफ होने लगता है, उसको बुखार नहीं है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, प्लेफुल है, लेकिन ये कॉफ जा ही नहीं रहा है, टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है, और इसको हम कितनी भी एंटी एलर्जिक दवाई दे दें या कोई इवन भाप दे दें, लेकिन ऐसे कफ जा नहीं रहे और ये कॉफ रह ही रहा है. सो दैट इज अ कॉफ which is called as protracted bacterial bronchitis cough. So मेरे कहने का क्या मतलब है, आपने समझा? इतने सारे there are so many different kinds of cough, and what we do as parents or what we do is कि हम एक कॉफ की बोतल लेते हैं, फिर हम चेंज करके दूसरा कॉफ का बॉटल लेते हैं, और हम खुद जाके कई बार ले आते हैं कि डॉक्टर ने पिछली बार ये लिखा था, एंड वी कीप ऑन ट्राइंग until we exhaust कि हमारी जो भी नॉलेज है उसके बाद we go to a doctor, which is not good. You can understand that there are so many different kinds of cough that I will have to see that what is the reason of cough. So now I come to the age group. These are different kinds of cough, and I will also tell you what are the different kinds of sounds in the cough. That I will play the audio. I will get back to that. First of all, I have to finish that what is the age group. So कोई भी baby normally 6 months से नीचे can have a protective reflex as cough. Normally छोटे babies का nasal block बहुत जल्दी होता है, एंड ये नेजल ब्लॉक के कारण जो सिक्रीशन पीछे की तरफ जाते हैं हमारे सांस की नली में, उसके कारण बेबी इरिटेट होकर नॉर्मली कॉफ करता है. सो अ न्यूबॉर्न और अ बेबी अंडर 3 months कैन हैव नॉर्मली कॉफ फॉर 4 to 5 times in a day. बट अगर ये कॉफ के साथ में बेबी को बुखार है, बेबी दूध नहीं पी रहा है, बेबी की सांस तेज चल रही है, या ये कॉफ 2 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है, उसको साथ में आंखों में पानी है, आंखें चिपक रही हैं, so that is a cough which I will tell immediately to visit a doctor. And mind you that no child under 6 months of age should be given a cough syrup without asking the doctor. So 6 महीने से छोटे बच्चे को अपनी इच्छा से कफ का सिरप ना पिलाएं, एंड स्पेशली अगर उनका कफ आपको लग रहा है बुखार के साथ में, सांस की तेजी है, सांस में से कोई आवाज आ रहा है, बेबी इतना अच्छा एक्टिव नहीं लग रहा है, पुअर फीडिंग लग रही है, सुस्त लग रहा है, तो स्पेशली ऐसे बच्चों को आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जो कि 6 महीने से छोटे हैं. अभी 6 महीने से लेकर अगर 2 साल तक की बात करी जाए तो नॉर्मल जो कॉमनली कफ होता है वो साथ में कई बार आवाजों के साथ होता है, और वो आवाजें नॉर्मली हम कहते हैं कई बार उसे व्हीजिंग साउंड. सो कुकर की जैसे विसल बजती है, साए साए, there may be a whistling sound which you as a parents may listen, and वो whistling sound even आप शायद थोड़ा दूर खड़े होंगे तो भी वो आवाज आएगी,
और वो चेस्ट में खड़खड़ से अलग होगी। एक आवाज होती है जिसमें चेस्ट में खड़खड़ाहट की आवाज होती है, जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा कफ भरा है, और एक होगी जिसमें आपको विसल जैसी आवाज आएगी। तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे को कई बार ऐसी विसल जैसी आवाज आती है सर्दी खांसी के साथ, और वो टिपिकली आवाज जो होती है उसे हम व्हीजिंग कहते हैं। तो 1 साल से छोटे बच्चे या 2 साल से छोटे बच्चे, उनकी सांस की नली जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है। अगर उसमें कोई भी इंफेक्शन हो जाए तो इस प्रकार की विस्लिंग आवाज कई बार बच्चों में देखने मिलती है। और इस प्रकार की विस्लिंग वाली आवाज का ट्रीटमेंट जो होता है वो कई बार नेबुलाइजेशन होता है, और अगर हम नेबुलाइजेशन नहीं देते हैं तो वो विस्लिंग वाला आवाज नहीं जाता है। और ऐसा विस्लिंग वाला आवाज नॉर्मली 7 से 10 दिन तक रहता है। एंड नॉर्मली ऐसा 1 साल में अगर कोई बच्चा है जिसको सर्दी खांसी हुई है तो बहुत हाई चांस है कि 30-40% बच्चों को ऐसी आवाज आ सकती है। ऐसी आवाज अगर बार बार आती है हर बार सर्दी खांसी के बाद, तो अगेन अगर बार बार किसी बच्चे को वीजिंग हो रहा है तो हमें एक अच्छे पीडियाट्रिक डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे समझना चाहिए कि आपके बच्चे को ऐसा बार बार क्यों वीजिंग का आवाज आ रहा है। सो नॉर्मली इस प्रकार का वीजिंग का आवाज टिपिकली जो 6 महीने से 2 साल के बच्चों में होता है वो एक और देखने वाली बात है। अभी 2 से 6 साल के बच्चों को किस प्रकार का नॉर्मली हम कॉफ देखते हैं। एक तो हम ड्राई कॉफ देखते हैं क्योंकि वो बच्चे बार बार स्कूल जाते हैं। जब वो पहली बार स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों से दे कीप ऑन मीटिंग, एंड वंस दे कीप ऑन मीटिंग दे आर बाउंड टू गेट सम इन्फेक्शन, एंड दे डेवलप टिपिकली अ वेरी ड्राई कॉफ which may be there more in the day, sometimes in the night, and this is a typical normal school age going cough which may be seen lasting for 7 to 10 days। ऐसे बच्चों को 5 से 7 दिन कॉफ रहता है, ठीक होते हैं, फिर 2-3 हफ्ते बाद फिर से सर्दी खांसी होके और परेशान होते हैं। तो द पेरेंट्स में फील दैट द चाइल्ड इज परसिस्टेंटली हैविंग कॉफ, बट आपको जरूर से ये देखना है कि क्या उन 2 एपिसोड के बीच में द बेबी इज फाइन। If the baby is fine between those 2 episodes, that means that is a typical school preschool age going cough, which may be sometimes seen. The other cough which we seen, which can be life threatening in this age, is a croupy cough, which I told you, where normal there will be cough cold, and on day 2, day 3, the child may have that will be the kind of voice the baby may be producing, and this is typically seen between 12 a.m. in the night to morning 4 a.m. So उस टाइम के ऊपर नॉर्मली इस प्रकार की आवाजें और सांस में तकलीफ देखने मिलती है, एंड दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी। इट इज कॉल्ड एज फ्लू, एंड यू शुड रश टू द नियरेस्ट इमरजेंसी विच इज पॉसिबल, एंड कीप द बेबी इन अपराइट पोजिशन, एंड उनको आपको बहुत ज्यादा परेशान या चिड़चिड़ा नहीं करना चाहिए उस वक्त। So that will be the thing, and humidified air, यानी अगर हम उसको warm steamy air देंगे तो he may feel sometimes okay, and even sometimes cold air may be good for him. So these are the two things which are commonly seen. Now the children above 5 to 6 years, अगर 5 से 6 साल से बड़ा बच्चा है और उसको ड्राई परसिस्टेंट कॉफ चल रहा है, तो देन अगेन इट इज अ टाइम वेयर यू शुड विजिट योर डॉक्टर एंड सी, क्योंकि स्कूल एज के बाद 6 इयर्स के बाद स्कूल गोइंग एज के अंदर टिपिकली अगर किसी को परसिस्टेंटली ड्राई कॉफ है तो देन यू माइट हैव टू विजिट द डॉक्टर एंड सी दैट देयर आर नो अदर रेड फ्लैग साइन वेयर यू माइट हैव टू वरी। रेड फ्लैग साइन मतलब अगर बच्चे को साथ में बुखार है, बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, बेबी को परसिस्टेंटली पिछले 1 महीने या 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी चल रही है, उसके साथ में उसको कभी चेस्ट में टाइटनेस है, वो खुद बोल रहा है मुझे सांस लेने में इतना अच्छा नहीं लगता है, या कई बार बच्चों को कफ के अंदर ब्लड भी आने लगता है, तो ये सारे साइन सिम्टम्स हैं जहाँ पे 6 साल से बड़े बच्चे को यू शुड विजिट अ डॉक्टर एंड सी इज देयर एनीथिंग व्हिच इज टू बी वरी। So now there is something which is called as acute cough, and there is something which is called as chronic cough. So acute cough is cough which is lasting for less than 3 weeks. Any cough which lasts for more than 3 weeks will be a chronic cough. Chronic cough एक ऐसी तकलीफ है जिसमें it is like a fever where you have to find a reason. Chronic cough you cannot sit and tell, okay, I will give the treatment on myself and I will wait that it will subside. Any baby who has cough lasting for more than 3 weeks should visit a doctor, because there can be so many other signs. जिस बच्चे को क्रॉनिक कॉफ रहता है, हो सकता है उसका लंग की बनावट अच्छी नहीं हो सकता है उसके लंग के अंदर इन्फेक्शन चल रहा हो सकता है कि ऐसे बच्चे को, जो मैंने आपको कहा था रिफ्लेक्स, जो कि कफ के रिसेप्टर्स हैं जो कि यहाँ पे लाइन बना के रखते हैं, हो सकता है उनकी लाइनिंग में कोई गड़बड़ हो
अगर उनका बच्चों का हाइट वेट नहीं बढ़ रहा है, क्रॉनिकली वो बीमार रहते हैं, उनके साइनस में भी इन्फेक्शन रहता है, उनके ईयर भी बार बार इन्फेक्ट होते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्रॉनिक कॉफ के अंदर कुछ गंदी गंदी या मेडिकली हम बोले तो कुछ लंबी क्रॉनिक बीमारियां हो सकती हैं। और हम जब तक ऐसे बच्चों को इन्वेस्टिगेट नहीं कराएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्रॉनिक कॉफ, आंसर इज क्रॉनिक कॉफ शुड ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज बी सीन बाय अ डॉक्टर। ओवर द काउंटर मेडिसिन यानी अपने से खुद से खरीद के मेडिसिन ना दें, और स्पेशली कोशिश करें कि हम उसे किसी डॉक्टर से दिखाएं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं आपको चाहता हूँ कि घर पे आप लोग इस प्रकार के कॉफ को आइडेंटिफाई कर सकें। तो मैं कुछ ऑडियो प्ले करूंगा और ऑडियो आप ध्यान से सुनिए, और फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार का कॉफ है एंड वी शुड स्टार्ट वरिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑडियो। तो ये पहला ऑडियो, इसे हम कहते हैं पर्टुसॉइड कॉफ, जहां पे पेशेंट को लगातार खांसी आ रही है और एक अचानक से सांस की नली बंद हो रही हो ऐसी आवाज आ रही है, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉफ होता है। और स्पेशली इसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। तो जब भी आपको लगातार खांसी मिले और उसके साथ में एक करके आवाज आए, यानी दिस इज नॉट गुड, यू शुड इमीडिएटली विजिट अ डॉक्टर। आई एम प्लेइंग यू अगेन सो दैट यू कैन लिसन। आई होप ये क्लियर है। देन मैं सेकेंड ऑडियो के ऊपर जाऊंगा, एंड सेकेंड ऑडियो विल बी दिस। सो ये एक कॉफ है जिसे हम ड्राई कॉफ कहते हैं, एंड ये ड्राई कॉफ बहुत ही कॉमनली बच्चों के अंदर देखने मिलता है, स्पेशली जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं। और ये प्रकार का कॉफ जो होता है वो कई बार थोड़ा इरिटेशन के कारण बच्चों में होता है, एंड दिस कैन बी एब्सोल्युटली नॉर्मल कफ। बट ये कॉफ आपको एक बार ध्यान में रखना चाहिए, दिस में ऑल्सो भी इवन हैबिट कॉफ। कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगातार अपना थ्रोट क्लियर करने की इच्छा होती है, तो इस प्रकार का कॉफ बच्चों में देखने मिलता है। तीसरा कफ, तो तीसरा कफ इज बेसिकली इट इज अबाउट, जो मैंने आपको बताया था, हल्के सर्दी खांसी के बाद बच्चे में, तो यहाँ के ऊपर स्पेशली बहुत ज्यादा खड्डे पड़ने लगते हैं। और अगर आप यहाँ पे भी देखें जहाँ पे पेट और चेस्ट मिलता है, वहां पे भी बच्चों को खड्डे पड़ने लगते हैं, उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, वो क्रूपी कॉफ होता है, क्रूप कफ। अगेन दैट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। फोर्थ कफ विल बी दिस। सो ये और ड्राई हैकिंग कॉफ में आपने इमीडिएटली एक चीज देखी कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ म्यूकस फंसा हुआ है और बच्चा उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, ये वेट कॉफ कहलाता है। अगेन आप अगर वेट कॉफ बच्चों के अंदर देखते हैं तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। दिस इज नॉट अ सिंपल ड्राई कॉफ जिसके sit and wait. So this is another one thing which you should worry. And now I'll play the last sound, which is the wheezing sound. So this basically is a, sorry, this is a barking cough. Uh, this is a barking cough which is seen. I'll just play. You can just hear for first 5 seconds. Okay, where you may feel that the baby is barking like a dog. So again, that is a worrying sound which is normally not commonly seen in dry cough. And if such kind of cough is heard, you should again start worrying. And the last sound will be like a wheezing sound, which I have spoken that अस्थमा के बच्चों में, जो टॉडलर बच्चे होते हैं सर्दी खांसी के बाद, वो बच्चों को छाती के अंदर विसल जैसी आवाज आने लगती है, एंड उनको थोड़ी सी ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होती है, एंड यहाँ पे भी अगेन उनको सांस में तकलीफ, और यहाँ chest you can see that they are breathing very fast. So that is one sound. I'll again play and you can listen.
So basically, it is a whistling sound which can be really audible even to the bare ears. Sometimes doctors listen to the stethoscope. If it is not audible, then sometimes stethoscope helps us to identify that is there any wheezing. So these are some of the things which are seen. Now the other things which I am really worried about and which are very rare though in our clinical practices, any baby who has a lot of cough and is not improving, and baby is otherwise having positional problem, like in some positions they have cough, in some positions they might not have. So these are again the things to be worried, because there may be something which is around here and pressing the airway, यानी उनकी सांस की नली कई बार ऊपर से प्रेस हो रही होती है, या इवन अंदर से कुछ प्रेस हो रहा होता है, कुछ वहां पे कुछ बच्चा, जैसे मान लीजिए कि आपने पीनट खिलाया था, पीनट खिलाते खिलाते उसको खांसी हुई, उसके बाद वो 1-2 हफ्ते तक ठीक रहा एंड सडनली उसको खांसी फिर से बढ़ने लगी। तो ऐसे बच्चों को क्या होता है, वो पीनट जो है वो सांस की नली में जाके बैठ जाता है, धीरे धीरे वो स्वेलिंग करके जब फूल जाता है और सांस की नली को पूरा ब्लॉक कर देता है, तो ऐसे बच्चे अचानक से खांसी करने लगते हैं, सांस में परेशानी होने लगती है। सो फॉरेन बॉडी पीडियाट्रिक एज ग्रुप में स्पेशली 1 से 4 साल के बीच में बच्चों को हम कॉमनली देखते हैं, और कई बार पेरेंट्स हिस्ट्री भी नहीं दे पाते क्योंकि वो हर बार घर पे नहीं होते हैं। कई बार छोटी छोटी चीज बच्चा मुंह में रख लेता है, याद नहीं रहता है। कई बार उनके बड़े भाई या इवन सिबलिंग्स कैन पुट समथिंग इन देयर माउथ व्हाइल प्लेइंग, एंड दिस इज वन हिस्ट्री व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। So a baby who has been coughing for long, that's why sometimes doctors tell it's better to get an X-ray between 1 to 4 years, because हमें पता नहीं कि कई बार बच्चों में फॉरेन बॉडी भी रह जाती है, कई बार मैंने आपको बोला ऊपर से कोई चीज प्रेस कर रही हो तो भी we can't tell. Now other thing which is there for chronic cough is, especially जो बच्चे छोटे होते हैं 1 साल से, they might sometimes have heart में hole. If the baby is having heart में hole और साथ में उनको सर पे बहुत पसीना आता है, they keep on having lot of sweating with feeding difficulty and they are not growing well. So अगर कोई बच्चा है जिसको बहुत ज्यादा खांसी है, साथ में growing not well, बहुत ज्यादा सर पे पसीना है, दूध पीते पीते they are not able to drink milk, they pause, वो रुकते हैं, फिर दूध पीते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर पीते हैं, तो ऐसे बच्चों को दिल में भी छेद हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि कफिंग जो है वो सिर्फ लंग से ही आए, या हमारे नोज से आए, या हमारे थ्रोट में से कहीं से आए। कई बार जो कफिंग है वो ऊपर में से कोई चीज दब रहा है उससे भी आ सकता है, अगर हार्ट में होल है तो भी आ सकता है। सो देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर कॉफ। सो कफ को यू कैन नॉट टेक इट सिंपली दैट ओके इट इज फाइन एंड इट विल इंप्रूव, right? There are certain red flag signs which has to be taken and understood while we are going through. So other thing which is last which I am going to tell you for red flag sign is acute cough. Acute cough and chronic cough, red flag signs. Red flag sign मतलब you have to immediately, probably in some time and maybe sometimes in minutes, visit a doctor. So in acute cough, अगर बच्चा normally he was absolutely fine, suddenly he has eaten something and he has started coughing and he has become blue and he is not able to breathe, that means it is called as choking. Then immediately you have to rush to the hospital where they have the emergency facilities. That is very important. Don't go to OPD, don't go to outpatient department. अगर आपको लग रहा है कुछ अटक गया है और साथ में बहुत coughing बढ़ गया है, this is a red flag sign. Immediately rush to the emergency. Other thing which is there is, if the baby is having lot of breathing difficulty with cough and sounds like wheezing and stridor. Stridor is and wheezing is a musical sound. अगर baby is having cough, breathing difficulty and साथ में इस प्रकार की आवाजें, immediately rush to the hospital. Again, cough which is associated with high grade fever and breathing difficulty, that means your baby might have an infection in the lung. Immediately rush to the hospital. अगर किसी को कफ है और मुंह में से बहुत ज्यादा झाग आ रहे हैं, मुंह में से कुछ ले नहीं पा रहा है, अगेन इट इज अ वरिंग साइन. इमीडिएटली यू शुड रश टू दी हॉस्पिटल. दैट मींस देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट ग्रेट. अगर कफिंग के साथ में मुंह में से बहुत झाग आ रहे हैं, आवाज बैठ गई है, बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही है, तो इस प्रकार की चीजें, अगेन इट इज अ वरिंग साइन फॉर acute cough. Right? In chronic cough means any baby who is having more than 3 weeks cough. हमें चिंता करना है अगर बेबी का साथ में वेट नहीं बढ़ रहा है, ऐसा उसको बार बार होता है, उसकी हाइट भी नहीं अच्छी बढ़ रही है, उसको अलग अलग जगह इन्फेक्शन होता है, स्किन के अंदर होता है, ईयर में होता है, साइनस में होता है, उसको साथ में मान लीजिए कि कोई और बॉडी के और भी सिम्टम्स हैं,
साथ में कफिंग है, या उसकी पॉटी बहुत ज्यादा चिकनी आती है, या मे बी उसमें ऑयल निकलता है, तो ये सब, या उसका जो कफ है उसमें गंदी बात आती है, उसमें से कुछ बलगम जैसा निकलता है, तो these are the signs where chronic cough can be worrying and you have to get the evaluation by a doctor. So these are some of the points which I wanted to highlight. Cough is really important to be understood by every parent because you are going to see and where you have to immediately start worrying. That's what I wanted to tell you in this class. And the other thing which will be that I will be taking up some questions. The first question is, what time should we bring the patient to the hospital? So I have already told you, कफ अगर क्रॉनिक है यानी 3 हफ्ते से ज्यादा है तो आपको हॉस्पिटल लाना है। अगर अक्यूट कफ में आपको सांस लेने में तकलीफ है या सांस के अंदर अलग अलग आवाज आ रही है, बच्चा कुछ खा नहीं पा रहा है, बहुत तेज बुखार है साथ में, आई थिंक दीज आर द साइंस वेयर यू हैव टू स्टार्ट वरिंग, या उसने कुछ आपको लग रहा है कि अंदर निकल लिया है और बेबी ब्लू हो रहा है, ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो दीज आर द साइंस वेयर यू हैव टू इमीडिएटली ब्रिंग टू दी हॉस्पिटल। So can cough get dry enough so that it does not bother my child? Yes, so ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राई कॉफ जैसे मैंने आपको बोला इज द कॉमनेस्ट कॉफ एंड दैट इज अ प्रोटेक्टिव कॉफ। अगर साथ में बेबी को कोई और साइन सिम्टम्स नहीं है, जैसे फीवर नहीं है, कोई कोल्ड नहीं है, बेबी खेल रहा है, अदरवाइज एक्टिव है, प्लेफुल है, और दिन में 4-5 बार उसको ड्राई कॉफ आ जाता है या नाइट में 1-2 बार आ जाता है, तो देन यू शुड नॉट स्टार्ट वरिंग एंड यू शुड नो। The other thing is, so what do you do? Is environment an issue for cough? So एक और क्वेश्चन ऐसा है कि क्या environment से भी coughing होता है? So environment is very very important as a part of coughing. अगर आप देखेंगे तो nitrous components and sulfur components are commonly very high in Ahmedabad, in Delhi, and ये सारे जो component होते हैं वो जो हमारे यहाँ के जो कफ रिसेप्टर्स हैं नोज से लेके जो एयरवे में, उनको बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं और ऐसे बच्चों को लगातार खांसी रहती है, और इसीलिए हम दिवाली के बाद स्पेशली कफ की जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों में वो 3 से 4 गुना बढ़ जाती है, एंड कॉमनली बच्चों को परसिस्टेंटली ड्राई कॉफ या इरिटेटिंग कॉफ रहता है, जिसको हम बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद भी कई बार ठीक नहीं कर पाते हैं, एंड प्रोबेबली इट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड द humidity in the air which makes the difference. So how do you stop a child coughing at night? So coughing at night is an important issue. ये बहुत ही एक important issue है। अगर कफ नाइट में सोने के बाद हो रहा है, साथ में उसको वेट कॉफ लग रहा है, या वो कॉफ जो है वो टाइम के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, या उसके साथ में आपने कुछ उसको मे बी इवनिंग में कुछ चॉकलेट्स खिलाए हैं या बाहर का कुछ शुगरी आइटम खिलाया है, एंड अचानक से बेबी की कॉफिंग नाइट में बढ़ जाती है या अर्ली मॉर्निंग बढ़ जाती है, दैट मीन्स यू शुड सी अ डॉक्टर। देयर मे बी अ पर्टिकुलर रीजन व्हाई द बेबी इज कफिंग, सो यू कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम कफिंग, यू शुड आइडेंटिफाई कि उसका रीजन क्या है, दैट कैन बी ओनली टोल्ड बाय द डॉक्टर एंड बाय एग्जामिनिंग देम। तो अगर नाइट टाइम कफिंग बहुत रहती है तो स्पेशली मीट योर डॉक्टर्स, क्योंकि एक सिवियरिटी ग्रेडिंग के लिए अस्थमा में नाइट टाइम कफिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। तो अगर किसी बच्चे को रात में बार बार खांसी आ रही है, वो नींद से उठ जाता है या अर्ली मॉर्निंग बहुत कफिंग करता है, यानी और बेबी मे बी हैविंग समटाइम्स अस्थमा और द कंडीशंस व्हिच मे बी मिमिकिंग अस्थमा, so that is one thing which is important. So how to protect babies from whooping cough? This is a very very important and relevant question, and because आप अगर देखेंगे whooping cough किन बच्चों में होता है, whooping cough या तो 3 महीने से छोटे बेबीज में होता है, या वो whooping cough होता है आजकल 10 साल से बड़े बच्चों में। ऐसा क्यों होने लगा है? ऐसा इसलिए होने लगा है क्योंकि जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं वो अपना जो पर्टोसिस का जो टॉक्सिन होता है या पर्टोसिस की जो इम्यूनिटी उनको मिलनी चाहिए वो टाइम के साथ उनकी चली जाती है, तो वो जब अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड भी करते हैं, वो कुछ कुछ चीजें जो ब्रेस्ट फीडिंग से जाती हैं और बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं, वैसा नहीं पॉसिबल हो पाता। और पर्टोसिस एक ऐसी बीमारी है, इसीलिए अंडर 3 मंथ्स इट इज वेरी कॉमन, क्योंकि तब हम वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज ही दिया होता है और इसीलिए बच्चों को बहुत जल्दी ऐसा पर्टोसिस हो जाता है, एंड अंडर 3 मंथ्स इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पर्टोसिस। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? यस, pregnant women before even getting pregnant, or the persons around 25-30 years who are thinking to about getting pregnant, they might tetanus toxoid आप लेते हैं, उसकी जगह आप DTaP वैक्सीन ले सकते हैं जो कि डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टोसिस का वैक्सीन होता है। तो टेटनस तो आप लेते ही हैं, उसकी जगह आप एक डोज उसकी जगह DTaP ले सकते हैं,
तो आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट और आस्क योर मे बी अ पेडियाट्रिशियन, आप कोशिश करेंगे और डॉक्टर से विजिट करके पूछेंगे तो जरूर होगा। दूसरा जो चेंज आया है, हम नॉर्मली 4.5 साल तक वैक्सीन देते हैं वूपिंग कफ का, पर्टुसिस का। आजकल 10 से 12 साल पे भी एक रिकमेंडेशन आया है कि आपको एक डीटीएपी करके वैक्सीन आता है, वो आपके बच्चे को दिलाना चाहिए, क्योंकि अभी इंसिडेंस मैंने क्या कहा 6 से 18 साल के बीच में बढ़ गया है। उसे कम करने के लिए आइडियली आपको एक और बूस्टर डोज उस वैक्सीन का देना चाहिए, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड है। व्हाई सच साउंड्स अराइज व्हाइल बेबी इज इन डीप स्लीप? सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीप स्लीप के अंदर बहुत सारी टाइम बच्चा आवाज करता है और हमें पता, इनफैक्ट वो दिन में भी कर रहे होते हैं, बट एनवायरमेंट में आवाज इतनी होती है कि हमें रियलाइज ही नहीं होता। जब नाइट के अंदर बिल्कुल आवाजें कम हो जाती हैं, आपको नहीं पता चलता है, तब यू रियलाइज कि यार मेरे बेबी का शायद नोज ब्लॉक है, नोज के जो सिक्रीशन थे वो सारे पीछे जाते हैं एंड दे कीप ऑन पाइलिंग हियर। जब वो यहाँ पे फाइल हो जाते हैं तो हमारे कफ रिसेप्टर्स उनको निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्पेशली रात में सबसे ज्यादा आवाज किस चीज की आती है? नेजल ब्लॉक की, स्नोरिंग की, समटाइम्स इवन वीजिंग। आपको पता चलता है कि अरे मेरा बेबी को तो वीजिंग साउंड्स, म्यूजिकल साउंड्स हो रहे हैं। सो नाइट टाइम नॉर्मली बिकॉज इट इज क्वाइट साइलेंट, देन यू लिसन मोर टू द वॉइस। स्पेशली यू आर एज अ आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर ऐसी आवाजें आ रही हैं तो यू कैन रिकॉर्ड ऑडियो और वीडियो एंड शो इट टू योर डॉक्टर इन द नेक्स्ट विजिट, बिकॉज समटाइम्स आप कुछ बोलते हैं और होता कुछ है। अगर आप ऑडियो दिखाते हैं तो स्नोरिंग पता चलता है, कई बार वीजिंग साउंड हो तो पता चलता है। सो दैट इज वन थिंग विच आई विल बी टेलिंग यू। सो विल बैक पैटिंग हेल्प इन सप्रेसिंग कॉफ? तो बैक पैटिंग नॉर्मली हमें बहुत कॉमनली करने को बोला जाता है घर के ऊपर, बट अगर म्यूकॉइड कफ है, यानी अगर चेस्ट के अंदर कुछ म्यूकस भरा है, कफ अगर गीला है, तो हम उसको रिलीज करेंगे तो ही वो हेल्प करेगा, बाकी हर एक कॉफ के अंदर इट डजंट हेल्प। ओके, तो शुड वी गिव जनरल कॉफ सिरप इन एनी टाइप ऑफ कॉफ? मैंने आपको ऑलरेडी बोला कफ के कितने सारे टाइप्स हैं, कफ की कितनी सारी वेराइटीज हैं, अक्यूट कफ अलग है, क्रॉनिक कफ अलग है, उसमें अलग अलग चीजें हैं। सो एक टाइप का कॉफ मेडिसिन कैन नॉट वर्क एंड यू कैन नॉट कीप ऑन चेंजिंग द कॉफ मेडिसिन एंड टेलिंग आई हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड इट्स नॉट वर्किंग। व्हाट इज द रीजन फॉर कॉफ? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे हमने हमेशा बात किया व्हाट इज द रीजन ऑफ फीवर? फीवर होता है तो बच्चे को काम करना है और रीजन ढूंढना है क्या है। सेम कॉफ है तो हमें रीजन ढूंढना है रादर देन कीप ऑन पोरिंग कफ के सिरप्स। Should I give ginger and honey to reduce cough to my child? So that is again a very important question. Honey हमारी medical science के अंदर has been tried multiple times and honey and tulsi has been found quite useful and dry hacking cough and cough of upper respiratory tract infection, यानी हल्की सर्दी खांसी साथ में बुखार हो तो cough and tulsi may be really good for sometimes the cough. So that's why अगर 2 साल से नीचे कोई चीज इंपॉर्टेंटली देनी है घर के ऊपर तो honey and tulsi you might try, but keep under 1 year usually honey is prescribed less क्योंकि it is associated with one of the serious illness which is called as botulism. तो इसीलिए 1 से 2 साल में maybe you might try honey. Otherwise under 1 year or under 6 months any cough syrup may not be great. Just ask your doctor before giving anything. So I hope this cup session was really good for you. I'll wait for your feedback and thank you Zydus Hospital for giving this opportunity and see you in the next Facebook live session. Thank you.